So good morning, everyone, and welcome to the morning meet. We'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is we started the fresh week of trading on a positive note. It was basically a range session with huge intraday volatility in a narrow band of 150 points. When Nifty made an attempt to trade Friday's low, but we managed to hold the Friday's low and close about 15,300 mark. So basically, Nifty closed at 15,350. But the real pain was in the broader markets, wherein the mid cap and small cap were hammered very hard, with both the indices closing negatively to a tune of 2 to 3%. And some of the stocks, the selling was very heavy. Many stocks were down 5 to 8%. So index was managed by basically HDFC Twins and Infosys. So while major metals and media names and reality stocks were hit very hard, while we see sector specifically, FMCG and IT had a good session, wherein FMCG was the best performing sector with smart gains in HUL and ITC and Britannia, while metals, the index was down 4%, and stocks specifically was down very much. So technically, the setup seems to be like if we hold 15,150, 15,100 levels, then if you close above 15,400, then a sharp short covering rally can be expected, and you can go and retest 15,700, 15,800. But whether we made a bottom or not, it will be difficult to gauge that. But a short covering rally above 15,400 is not ruled out. Yesterday, Bank Nifty, if you see, it did underperform Nifty, wherein Nifty closed with smart gains. Bank Nifty closed negative, and even after a strong hand from HDFC Bank, it did close in the negative territory. And PSU banks were hit hard. The index itself closed lower by 2%, but HDFC Bank contributed almost 200 points to the bulls. So even on the Bank Nifty front, if 32,100, 32,300 is held, and if we claim 33,000, then a short covering revenue in Bank Nifty is also not ruled out, and we can test 34,000, 34,300 levels. And this could be only short covering, and we have not made a bottom as such. And from the flow side, yesterday to institutional equity, FI had a net sell figure of 1217, while DI did have a net buy figure of 2093 crores. And on derivative front, what we saw is Nifty futures. I saw some long liquidation to the tune of 0.28%. That is reduction of 0.04 million shares. And now the total outstanding position stands at 13.24 million shares. While Bank Nifty, the total OI stands at 32.29 lakh shares against 31.32 lakh shares from the previous trading session. And the Nifty PCR OI too saw an uptick, wherein it closed at 0.81 as compared to its previous close of 0.75%. While major put additions were seen in 15,200 and 15,000 strikes. So basically, these were put writing activity, and it suggests that 15,200 and 15,000 Nifty has a strong support in that zone. While on calls from 15,500 and 15,600 strikes saw some addition to the tune of 3.07 and 1.82 million shares. So resistance can be faced near these zones. And the top 5 long additions were seen in JK Cement, Britannia, ABB, and Jubilant Foodworks, while short positions were witnessing Chambal Fertilizers, Apollo Tires, GNFC, and Vedanta. While stocks that are in FNO band for today's trading session is RBL Bank and Indiabulls Housing Finance. So that would be it from my side. Now I'll pass it over to Varun sir for further research updates. Over to you, sir. Yeah, thank you. So, couple of updates from my side. First, on Bharat Forge. So, company has decided to consolidate its electric vehicle business under Kalyani Powertrain, a wholly owned subsidiary of Bharat Forge, for better strategic alignment.
The current stake in Refu was acquired by Bharat Forge by entering into JV with Refu Electronic GmbH, which is a Germany Germany-based company. Refu is in the business of developing, manufacturing, and selling on board controllers and components, mainly drives, inverters, AC/DC converters, etc. Refu's products are served for all e-mobility vehicles, that is hybrid and electric, two-wheeler, three-wheeler cars, and commercial vehicles. Bharat Forge has approved to transfer its stake in Refu to Kalyani Powertrain in consideration of subscription of equity shares of KPL. So this restructuring of business is very much positive for Bharat Forge. Currently, we do not have a formal coverage on the stock. Second, on Birlasoft, company has announced that it has entered into a global partnership with Global Cloud in order to help its clients with their digital transformation. As a part of this partnership, Birlasoft will set up a center of excellence with 200 plus Google Cloud platform specialists to build digital solutions for its clients. If we look at growth of Google Clouds globally, it has been growing at the healthy rate of 45% year on year over last 4 quarters and is expected to record healthy growth going forward as enterprises continue to shift to cloud. This will benefit Birlasoft as it would provide opportunity for the company to be partner to its clients for their cloud transformation journey. We currently have a buy rating on the stock with a target price of 455. Next update is on RBI. We understand that RBI is coming down heavily on fintech companies. We believe RBI is very keen on issuing digital banking licenses as reflected by the recent statements of RBI governor. However, RBI has been coming down heavily on fintech companies and has been advocating tighter regulation over past several months. It's our view that the message is clear that financial technology companies will increasingly be regulated more. RBI's Payment Vision 2025 document also talks about looking at various charges for payments made in India in such a way that it further encourages this digital adoption. So this we believe is a possibility that various payment charges can come down, and this will encourage even more tech-driven credit adoptions. It is clear to us that the risks are increasing for the financial technology sectors, for which regulations have been a light touch so far, with regulatory arbitrage now being plugged slowly. We are expecting a slowdown in growth and our profitability prospects for the fintech sectors in India. So based on our understanding and interpretation of the circular, we understand that this will impact players like Slice, Unicards, etc. However, this regulation is likely to have an extremely positive impact for all the banks, which has a large credit card base. Next update is on FMCG sector. So we understand that palm oil and crude oil prices has come down significantly. So palm oil prices is now trading below $1,300 from the peak of $1,900, whereas crude oil is at trading below $107 from the peak of $130. Palm oil is a chief ingredient, close to 50% of the raw material cost for packaging food industries, and also an extremely critical input for soap manufacturing companies. We understand that almost all the companies, nobody will be taking a price cut despite slowdown in the raw material prices. And the basic reasoning is because earlier when the prices was rising, these companies could only pass on 50% of the raw material increase in the raw material cost and not 100% of it. And as a consequence, input cost pressure has put pressure on the gross margin of these companies. So, and hence the current slowing down, we understand that is not going to be reflected in terms of price cuts. On the contrary, all the companies will slow down the price hikes which they were taking earlier. So we understand that this bodes well for the FMCG sector overall. Yeah, so that's it from my side. I now hand over the call to Hitendra. Over to you, Hitendra. Thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see further. Reliance has been imposed a 30 lakh penalty from SEBI. This is regarding their non-compliance of prohibition of insider trading regulation or UPSI information. So in that matter, SEBI has said that they had not given fair disclosures for their Facebook deal that was of 9.9% stake sale from in Geo platforms in April 2020. The deal was worth rupees 43,574 crore, and they had imposed a penalty of 30 lakh rupees.
Yes Bank is in advanced stages of negotiation to close a $1 billion funding raise from private equity Carlyle and Advent International. This fundraising has been progressing slowly because of the ARC deal that was running offload to a large chunk of bad loan books. So if we see any bounce in the stock, so we should try to exit from the stock only, and we should not make frustrations. Tata Steel has imported about 75,000 tons of coal from Russia in the second half of May. Earlier, Tata Steel was saying that they would stop doing business of Russia, but they have imported this coal, and now they are saying that this coal, this order was placed before their decision of doing stopping of business from Russia. ONGC has approved the extension of additional charge of chairman and MD to Alka Mittal, the director of HR, for the next 2 months, that is up to 31st August, till the new incumbent is been found for that post or appointed to them. ICICI Prudential has announced a record bonus of 969 crores to policyholders for FY22. This is 12% up on year, and this is the 16th annual bonus and highest ever till date. The board of debt-ridden telecom firm Vodafone Idea are planning to meet on 22nd June to raise the fund of 500 crore for Vodafone Group, and this would be done through issue of equity share or convertible bonds on preferential basis to one or more entities of Vodafone Group. Adani Power has completed 100% equity shares of support properties, that is Eternus Real Estate, for the respective shareholders of 6094 crore earlier this month. Adani Power had also entered a share purchase agreement with the above two companies. State-owned lender Bank of India is also planning to raise 2,500 crores in a fresh equity capital as to increase public shareholding in the bank to 25% to comply with the regulatory norms. Now, presently, the public shareholding in the bank is 18.59%, and according to SEBI norms, all the listed companies are required to comply with the minimum public shareholdings of 25%. Ashok Leyland, the commercial maker Hinduja Group flagship firm, has strengthened its CNG operated intermediate commercial vehicle portfolio with its launch in EcoVent Star 1115, the truck in 11.44 segment, and this would be the gross weight value in this category. So they are now into CNG operated trucks also, and with the 1115. Suven Life Sciences has informed exchange that the directors will meet on 24th for raising funds through issue of equity shares on a right basis to existing shareholders. Telecom industry has said that government has extended the PLI scheme for the telecom industry by another year in the scope to cover designing led manufacturing. This will provide additional incentives of 4,000 crore 4,000 crore under this amended scheme. AC International has informed exchange that they have secured a new order of 1,092 crore across its various businesses such as transmission, distribution, railways, civil, and cables. Yesterday we saw that due to news of selling of Sterlite plant, we have seen fall in Vedanta. Now the fishermen of that area are saying that they wanted the plant complete to be shifted from that area, and Anil Agrawal group should not sell it to someone else also. So there would be more use under this law. Steel duties are going to due to steel duties, the exports can be trimmed to 35 to 40% as per CRISIL. On an year, 10 to 12 million tons, this would be approximately. The currently 15% export duty was on the finished steel product last month, and we had reached a record high of 18.3 million tons in the last week fiscal due to Russia-Ukraine conflict. Apollo Hospital is going to operate and manage 375 beds tertiary hospital in Chittagong, Bangladesh, and this would be 375 bed multi-specialty hospital in the area. Now the big oil companies are betting on the green hydrogen energy. Now they are now investing multi-million dollars in that, and because now they are also focusing on low carbon future and carbon neutral thing, and they will be giving clean fuels for that can be shipped around to power trucks, ships, or even airplanes also. So that's it from mine. I'll hand over to Maraz sir for more updates. थैंक यू हितेंद्र एंड वरुण सर फॉर ऑल दोस अपडेट्स। अब हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। यदि रिसर्च न्यूज़ की बात करें तो भारत फोर्ज ने कल ये कहा है कि वो अपना जो स्टेक है रेफू में जो उन्होंने एक्वायर किया था जॉइंट वेंचर के साथ, रेफू इलेक्ट्रॉनिक जर्मनी की कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स कंट्रोलर्स बनाती है और सारी तरीके की ईवी मोबिलिटी में लगती है, चाहे कि 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो। तो उन्होंने कहा है कि ये स्टेक वो एक सेपरेट कंपनी कल्याणी पावर ड्रिल करके है जो होली ओन सब्सिडरी रहेगी भारत फोर्ज की, उनको ट्रांसफर करेंगे
ओवरऑल अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करने के लिए। और बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो जो रेफो का स्टेक है वो कल्याणी को ट्रांसफर करेगी इन कंसिडरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ कल्याणी पावर शेयर, यानी कल्याणी पावर के शेयर्स भारत फोर्ज पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल ये रिस्ट्रक्चरिंग होगा। हमारी अभी तक कोई फॉर्मल कवरेज नहीं है स्टॉक पे, पर हमें लगता है कि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव मूव है। बिरला सॉफ्ट ने कहा है कि वो गूगल के साथ टाई अप करेगी ओवरऑल डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए। ओवरऑल ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, पॉजिटिव होगा बिरला सॉफ्ट के लिए। हाल ही के समय में हमने देखा है कि काफी सारी कंपनियां ट्रांसफॉर्म हो रही है डिजिटल पे और क्लाउड सॉल्यूशंस पे, तो ये माइग्रेट करने में बेहतर मदद करेगी ओवरऑल कंपनीज को, और इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगी बिरला सॉफ्ट गूगल की पार्टनरशिप के साथ, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा। आरबीआई ने कहा है कि वो फिनटेक पे और कड़े नियम ला सकती है, उन्हें और रेगुलेशंस के अंदर ला सकती है ओवरऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म के एडॉप्शन के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो है बैंक के लाइसेंस, डिजिटल बैंकिंग के लाइसेंसेस और भी देना चाहती है, पर उसके पहले वो थोड़े रेगुलेशंस को टाइटर करेगी, और इससे एग्जिस्टिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या फिनटेक कंपनीज है उन पे इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे कि स्लाइस या यूनिकार्ड है, जिनके ओवरऑल एक एडिशनल जो चार्जेस है वो भी कम हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा उन बैंक्स के लिए जो हालांकि अभी क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक अच्छा होगा कंज्यूमर के लिए। पाम ऑयल और क्रूड ऑयल के जो दाम है वो काफी तेजी से गिरे हैं। पाम ऑयल जो पहले $1800 पे ट्रेड करता था, अब $1300 पे आ गया है, और क्रूड भी जो $130 पे था वो $160 पे आ गया है। यदि एफएमसीजी कंपनियों को देखो तो 50% जो उनका रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है वो पाम ऑयल के थ्रू होता है, तो ये पाम ऑयल कम होने की वजह से एक थोड़ा सा मार्जिन ईज मिलेगा एफएमसीजी कंपनी को। हालांकि सभी कंपनियों ने कहा है कि वो अपनी कीमतें हैं वो कम नहीं करेगी, क्योंकि जब भी पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट खाली 50% पास थ्रू किया था, बाकी का अपने मार्जिन पे हिट लिया था। तो वो जो उनकी प्राइस इंक्रीज है उनकी पेस को शायद कम कर सकती है, पर प्राइस डिक्रीज नहीं करेगी। ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा एफएमसीजी के लिए। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सेबी ने कुछ 30 लाख की पेनल्टी लगाई है। हालांकि ये तो कंप्लायंस ऑफिसर्स का ओवरऑल वायलेशन दिख रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस का। इनकी जो पहले डील हुई थी फेसबुक के साथ, अभी उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं किए थे। हालांकि ये पेनल्टी ओवरऑल डील साइज से काफी कम है, और 43,574 करोड़ की डील साइज थी। यस बैंक कह रहा है कि वो एडवांस निगोशिएशंस में है ऑलमोस्ट $1 बिलियन इक्विटी फंड रेज के लिए। ये प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल एंड एडवेंट इंटरनेशनल से फंड रेज करेगी। इस न्यूज़ के चलते हुए यदि हमें कोई भी मूवमेंट मिलती है स्टॉक में, यदि कोई भी स्टॉक में अटका हुआ है तो वो ये मोमेंटम यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। ओवरऑल काफी सारे अभी भी इश्यूज है येस बैंक में। टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट 75,000 टन कोल इंपोर्ट किया है रशिया से। हालांकि टाटा स्टील का ये कहना है कि उन्होंने जब बैन लगाया था रशिया से ट्रेड करने, ये डील उससे पहले हो चुकी थी, इसके चलते हुए ये इंपोर्ट किया है, पर आने वाले समय में वो रशिया से कोई भी डील नहीं करना चाहते। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने ये कहा है कि उन्होंने अलका मित्तल जो एचआर में है उनको फिलहाल के लिए ओएनजीसी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट दिया हुआ। ये इंटरिम रहेगा 31 अगस्त तक, जब तक कि ओवरऑल कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है उस पोस्ट पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ऑलमोस्ट 970 करोड़ का बोनस दिया है पॉलिसी होल्डर्स का। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट बोनस है, और ओवरऑल ये 12% ऊपर है पिछले वर्ष से। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो एक अपनी जो बैठक है वो करेगी कंसिडर कर फंड रेजिंग के लिए 22 जून को। ये ओवरऑल 500 करोड़ होगा वोडाफोन ग्रुप के लिए ओवरऑल फंड रेजिंग होगी। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ओवरऑल फंड रेजिंग करना चाहते हैं 2500 करोड़ की। ये फ्रेश इक्विटी होगा जो कि ओवरऑल पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाएगा 25% से टू कंप्लाई रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए। प्रेजेंटली पब्लिक शेयर होल्डिंग जो बैंक में है वो 18.59% है, तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से 25% के आसपास की होनी चाहिए पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो इसकी वजह से ये ओवरऑल एक फंड रेजिंग 2500 करोड़ की कर सकता है। अशोक लेलैंड ने कहा है कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उन्होंने उन्होंने अपना सीएनजी का पोर्टफोलियो भी लाया हुआ है कमर्शियल व्हीकल्स में।
ICV कर कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स में उन्होंने ई-कॉम स्टार करके एक ट्रक लॉन्च किया है जो कि 11.5 टन के वेट की कैटेगरी में आता है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा अशोक लेलैंड के लिए। सुवेन लाइफ साइंस ने कहा है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 जून को मिलेंगे, बेसिकली फंड रेजिंग के लिए मिलेंगे, जो कि राइट बेसिस पे होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। भारत सरकार ने जो टेलीकॉम की PLI स्कीम है उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया है। ये बेसिकली डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देगी और ओवरऑल 4000 करोड़ की इंसेंटिव्स इस स्कीम के द्वारा दिए जाएंगे। KEC ने कहा है एक्सचेंजेस को कि उनको नया ऑर्डर मिला है 1090 करोड़ के आसपास का। ओवरऑल ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज और सिविल केबल्स के आसपास केबल्स का बिजनेस उनको हमें वर्टिकल्स में बिजनेस मिला है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो स्टील की ड्यूटीज जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उनको ट्रिम किया गया है और क्रिसिल के द्वारा ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट जो है वो 35 से 40% ईयर ऑन ईयर कम हो सकता है ड्यूटीज की वजह से। ओवरऑल 10 से 12 मिलियन टन इस साल एक्सपोर्ट होगा, जिसपे ओवरऑल एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% के आसपास लगती है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे आता है स्टील मार्केट पे। अपोलो ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में एक 375 बेड का नया हॉस्पिटल कमीशन किया हुआ है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। So that's all from our end. We'll conclude the call over here. Thank you everyone for joining in and have a nice day.